এটা কথা কওঁ, এটা কথা, মই একদম চিধা মানুহ, মোৰ কোনো মই কাকো খাতিৰ নকৰোঁ পৃথিৱীৰ কথা। আপোনালোকে মোক পইচা দিব নালাগে, মই যিখিনি গালো বছ। আই এম গোয়িং অফ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, বাট আই লাভ ইউ। মই আপোনালোকক ভাল পাওঁ, মই আপোনালোকক ভাল নাপাওঁ। आंसू था। जुबीन दा ने पैसा नहीं, लोगों के दिल जीते, और आज उन्हीं दिलों का समुंदर उनके पीछे चल पड़ा। ये है हमारे जुबीन दा का असली दौलत, प्यार, इज्जत और एक अमर विरासत। दुनिया के इतिहास में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए करोड़ दिल एक साथ धड़कते हैं। माइकल जैक्सन के बाद दुनिया ने देखा जुबीन गर्ग का फ्यूनरल, जो बन गया 4 सबसे बड़ा गैदरिंग इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये सिर्फ एक आर्टिस्ट का एंटिम यात्रा नहीं था, ये असम के हर इंसान का आंसू था। जुबीन दा ने पैसा नहीं, लोगों के दिल जीते, और आज उन्हीं दिलों का समुंदर उनके पीछे चल पड़ा। ये है हमारे जुबीन दा का असली दौलत, प्यार, इज्जत और एक अमर विरासत। মই মৰিলে এইটো গানে বাজিব কিন্তু। So this song is so important for you, for me, for everyone. মই মৰিলে কোমল কোমল তোমাৰ উঠৰ পৰফে খজল খজল তোমাৰ চকুৰ মৰমে এজাক বৰষুণে মোক ধুই থৈ গ'ল, এজাক সুবাসে মোক চুই থৈ গ'ল। কোমল কোমল তোমাৰ উঠৰ পৰফে খজল খজল তোমাৰ চকুৰ মৰমে।
ये एक ऐसा आर्टिस्ट था जो कोई ऐसा रंग नहीं था जिसमें इन्होंने काम नहीं किया हो। अपने कल्चर के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए हर तरह से उन्होंने अपने म्यूजिक को एक्सप्लॉइट किया और लोगों तक पहुंचे, पूरी दुनिया तक पहुंचे। और उनकी जो मृत्यु है उससे म्यूजिक जगत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और ये इतना बड़ा नुकसान है कि सदियों तक इसकी भरपाई नहीं हो सकती। मगर जिंदगी मौत का एक खेल चलता रहता है। हम हमारे बहुत अजीज लोगों को खो देते हैं, मगर उनके काम को हमको सदियों याद करना है। और मैं उनके परिवार वालों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी से निकलने की ताकत दे, और मैं जुबीन की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करता हूं। और आप लोगों से मेरी केवल यही गुजारिश है कि उनको हमेशा अपनी यादों में रखिए और उनके संगीत को और ज्यादा आप सुनिए। জীবন গড়ে গো নিবলে একো কেনে পাবা তুমি। মই মৰিলে এইটো গানে বাজিব মন যায় কেতিয়াবা মই গুচি যাম বহুত দূৰলৈ, এটা বেলেগ জেগাত। এই মায়ার ধরা দুদিন মাথো থাকিবা তুমি, জীবন গড়ে গো নিবলে একো কেনে পাবা তুমি। মই মৰিলে এইটো গানে বাজিব लेजेंड। जिंदगी में इंसान आखिर क्या समेटता है? धन दौलत, जमीन जायदाद, महंगी गाड़ियां और ऐशो आराम से भरी जिंदगी। लेकिन जुबिन गार्ग जैसे कलाकार ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज समेटी, लोगों का प्यार और सम्मान। और जब वह इस दुनिया से विदा हुए तो वही लोग उनके साथ उनकी अंतिम यात्रा में चले। भारत के इतिहास में ऐसे अभूतपूर्व दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया। असम में महान गायक जुबिन गार्ग की अंतिम यात्रा में लगभग 15 लाख लोग शामिल हुए। आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि जुबिन गार्ग की अंतिम यात्रा दुनिया के इतिहास की छोटी सबसे बड़ी अंतिम यात्रा थी। इस सूची में अब इनका नाम जुड़ गया है, महान हस्तियों जैसे माइकल जैक्सन, पोप फ्रांसिस और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के साथ। यह इस बात का प्रमाण है कि लोगों के दिलों में जुबिंदा के लिए कितना अथाह प्रेम था। जुबिंदा हमेशा के लिए एक सच्चे लेजेंड। जिंदगी में इंसान आखिर क्या শুনাপৰে মোৰ শেষ ঘৰ, শেষ মঞ্চ। এতিয়াৰ পৰা গান নাগাওঁ আৰু মই মাথো শুনিম। স্পেচিয়েলি মই নাইট চুপাৰ কেইখনক কৈছো, উজনিলৈ অহা যোৱা কৰোঁতে
সোণাপুৰৰ এই ঠাইখিনিতে মায়াবিনীটো ডাঙৰ কৰিব যাবি ৰৈ থাকিম উজাগৰে ৰাতিৰ বুকুত মই আগতেও কৈছিলো আৰু এতিয়াও কৈছো মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই সৰু সজা দেখুৱাই দিলো কোন হনে তাত ব্ৰাহ্মণ কলিতা আলী ৰহমান ডেকা বড়ো ৰাভা পূজাৰী আৰু এইটো কি কয় নমাজ পঢ়াই যে মৌলবীও আহিছে সৰু সজালৈ I love people, I love men. সেইবাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত দাকো কৈছো মই বিৰোধী দলকো কৈছো লুৰি নকিল সকলোকে কৈছো পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু মই সৰু সজাই মানুহৰ অসমখন বিচাৰিছিলো চাই থাকিম সোণাপুৰৰ পৰা খেলি মেলি হলে কষ্ট পাম উভতিও আহিব নোৱাৰিম যোৰহাটৰ মানুহখিনিয়ে কষ্ট পাইছে বুলি শুনিছো মোৰো যাবৰ মন আছিল প্ৰিয় ঠাই দেউতাৰ ঠাই উপায় নাই পলম হলে শৰীৰটো কষ্ট পায় বাকি গৰিমা আৰু দেউতাই গুৱাহাটীতে থকাটো বিচাৰিলে একো নাই গুৱাহাটীলৈ আহিলে মাত দি যাব সোণাপুৰতে থাকিম আৰু এটা কথা যোৰহাটত প্ৰতিমূৰ্তি এটা হ'ব বুলি শুনিছো গুচি যাম কেতিয়াবা কেন্টা কাকো খাতিৰ নকৰো মায়াবিনী ৰাতি ধুমুহাৰ খতে মাজুলীবাসীয়ে দুখ নকৰিব দেই মনত পৰিলে গাই দিব মাজুলীৰ এজনী ছোৱালী নিমাতী ঘাটলৈ যাব নোৱাৰিম আৰু একো নাই মোক প্ৰতিটো বসন্ততে পাব অসমবাসীয়ে শৰতত গাইছো বহাগত গাইছো ৰদত গাইছো বৰষুণত গাইছো দুখৰ গান সুখৰ গান শিশু মুক্তি মায়া অনামিকা মাথো নতুন গান গাব নোৱাৰিম বন্ধ হৈ থাকিল চেলা সকলো এতিয়াৰ পৰা আৰু শুনিম শেষ মঞ্চখনৰ পৰা সোণাপুৰেৰে পাৰ হৈ গলে গাই যাব কেতিয়াবা ধুমুহাৰ খতে মাজতে খাথৰ এটা কওঁ ছিংগাপুৰত মহন্তদাই কোৱা মতে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল আছিল মই আগতেও কৈছো সাগৰ মোৰ প্ৰিয় সিদ্ধাৰ্থ শেখৰ মই একেলগে সাগৰ গলো পিছত গম পালো খেন্থা মই মৰি থাকিলো বোলে সোণাপুৰৰ পৰা মই জুবিন গাৰ্গে কৈছো ছিংগাপুৰত কোন সেইকেইটা তাত নাই নহয় মই এতিয়া খাৰগুলি কাহিলীৰ পৰা কতোৱে নাই মই এতিয়া সোণাপুৰ মাথো সোণাপুৰে মোৰ শেষ ঘৰ শেষ মঞ্চ এতিয়াৰ পৰা গান নেগাও আৰু মই মাথো শুনিম স্পেচিয়েলি মই নাইট ছুপাৰ কেইখনক কৈছো উজনিলৈ অহা যোৱা কৰোতে সোণাপুৰৰ এই ঠাইখিনিতে মায়াবিনীটো ডাঙৰ কৰিব যাবি ৰৈ থাকিম উজাগৰে ৰাতিৰ বুকুত মই আগতেও কৈছিলো আৰু এতিয়াও কৈছো মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই